A truly warm welcome to the USAID Bulletin. I'm Meena Tariq. In today's USAID Bulletin, we will be taking a look at the partnership of the United States Mission to Pakistan and the Government of Pakistan in the field of education with a specific reference to higher education. USAID has been working in Pakistan since the country's independence to provide quality education to Pakistani students through its various infrastructure projects. In April 1955, the United States and Pakistan joined together to establish the Institute of Business Administration, or IBA, in Karachi. This was an initiative that was associated first with the Wharton School at the University of Pennsylvania and later the University of Southern California. IBA remains one of the leading business schools in Pakistan today. During the same time period, USAID's assistance package for Peshawar University included funding for the construction of facilities and equipment for the new colleges of agriculture, engineering, education, and home economics. In the 1960s, USAID funded the construction of teacher training facilities in Lahore, Lyalpur, Multan, Ghulam Muhammad Barrage, and Montgomery to improve teacher education and increase the availability of trained teachers. In 1989, USAID extended a $10 million grant to build economic facilities and procure equipment and furnishings for the newly established Lahore University of Management Sciences, or LUMS. Like IBA in Karachi, LUMS has emerged as a premier institution of higher learning in Pakistan, not only in management but in a variety of other fields as well. USAID has also supported the construction and rehabilitation of 17 Faculty of Education buildings across Pakistan, which together supports more than 5,000 student teachers and 200 faculty members total per year. Through this project, USAID has also provided in-service trainings to almost 14,000 educators and has enabled students to earn their bachelor's or associate degrees in education by funding more than 3,100 scholarships. In 2004 to 2009, USAID provided assistance to Forman Christian College in Lahore to partially fund the construction of a new science building. In 2010, the college also received a grant to construct a women's dormitory. USAID also supported the establishment of 3 advanced research centers and labs where Pakistani universities partner with American universities to conduct joint research for practical and policy solutions for energy and water problems in Pakistan. These centers are located at Mehran University of Engineering and Technology in Jamshoro, the National University of Science and Technology in Islamabad, and the University of Engineering and Technology in Peshawar. Let's take a look at this special report on the Center of Advanced Studies from our reporter. जी मीना, इस वक्त मैं नस्क यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर यूएसएड ने सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज बनाया है। सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज यूएसएड की एक काविश है जिसने पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम में तहकीक का अंसर उजागर किया है ताकि बिजली की बहरान और पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सके। पाकिस्तान में ये अपनी तर्ज का वाहिद निज़ाम है जिसका मकसद पाकिस्तान की नौजवानों को पानी और तवानाई जैसे शोबों की तरफ मुतवज्जा करना है। ये सेंटर्स पाकिस्तान की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग जामशोरो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर में कायम किए गए हैं। ये सेंटर्स तवानाई, ज़राअत और पानी के शोबों में महारत रखने वाली अमेरिका की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए मुंसलिक है, जिससे अब तक 150 से ज़ायद पाकिस्तानी तुलबा और असातिज़ा ने अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में अपना सेमेस्टर मुकम्मल कर चुके हैं। अमेरिका पाकिस्तान सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज बराए तवानाई के शोबों में आला तालीम के मौके फराहम कर रहा है। ये मराकज़ पाकिस्तान के होनहार नौजवानों के लिए ऐसी जगह है जहाँ वो अपनी काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी तहकीकाती सरगर्मियों, वो वज़ाइफ और टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बिना पर ये मराकज़ निजी और सरकारी शोबों में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो रहे हैं। साथ ही साथ ये मराकज़ तलबा और असातिज़ा के लिए तवानाई के शोबे से वाबस्ता तालीमी इदारों और सरकारी महकमात में मुलाजिमत को भी यकीनी बना रहा है, जिससे पाकिस्तान तवानाई और पानी की शोबों में मजीद मुस्तहकम हो रहा है। Thank you so much. It's time to have a look at what we have for you in our next bulletin.
Thank you so much for joining us. We look forward to your comments and your suggestions down below. And we look forward to seeing you with our next bulletin next week.